ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಸಮಸ್ತಜನಕಲ್ಯಾಣೇ ನಿರತಂ ಕರುಣಾಮಯಂ ನಮಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಂ ದೇವಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ. ಓಂ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಮಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಃ ಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. Two things were proved yesterday, that the external objects and the cause, because of this the cause of knowledge is external objects, because the knowledge is variety, which Vaitathya, and some klesha. These two are dumped in yesterday's arguments, and we saw that these two are rejected. Yasmat, why they are rejected? Because one more important point is Yasmat nasti bāhyam nimittam, because there is nothing called external objects. There is no external objects. Now these two shlokas are very important in the sense it will give you to another dimension. So listen, let us carefully. Chittam na samspruṣatyartham नार्थाभासं तथैव च अभूतो यतश्चार्थो नार्थो भासस्ततः पृथक्. चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक्. Now see, we'll see Bhāṣya later on again. He says, no external objects. First of all, if there are external objects, then the question of gaining knowledge, etc., etc. Therefore, since there are no external objects, consciousness, that is chittam, here consciousness, ध्यान से सुनना आपको, doesn't come in contact with any external object. First, अभूतो ही जागृतेपि स्वप्नार्थवत् एव बाह्य शब्दादि अर्थः यतः अहेतुत्वात् च. Meaning what? See, because of the above reasoning also, in the previous Śloka, because there is no samklesha, there is no variety, then what is it actually it is going to prove? It is pointing out, the finger is pointed towards, that the object itself is non-existent. If there is really an object, then there might be a contact. But there is no object,
even in the waking state. There are no external objects even in the waking state, just as a dream object is, स्वप्नवत. Now इस पर थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे. Chitta means what? Chitta means spurana. One by one we are going. Spurana. This spurana, what is now pointed out is that statement is neither it is coming in contact with an external object, spurana, chitta, nor is it coming in contact with the reflection of the object, आभासा. पदार्थ आभास से भी संपर्क में नहीं आता. What is that? Consciousness, chittam. Chitta does not come in contact with that. Why? Because there is no external objects that we have seen. External objects are not there. If it is there, it would have been, real experience would have been take place. But the logic what you gave, that variety is there, therefore object should be present, it need not be. Because in the case of illusion also, perception might be there. So some klesha, that also is ruled out. Why? Because, so therefore, there are no external objects that we have seen, and this abhasa chitta is there. Abhasa chitta means the reflected consciousness. The vastu is reflected in the consciousness. Chitta, abhasa. So, चित्त आभास से भी माने चित्त आभास से भी इसके भिन्न, मीनिंग अदर देन द आभासा, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस. ओरिजिनल यू टेक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, चित्त इज नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट. अच्छा, यू से आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द आभास के साथ संपर्क हो, उसी के साथ भी संपर्क नहीं है. यू अंडरस्टूड नाउ? नाउ Chitta is not. Now one thing, how jnana takes place, first of all, let us see now, our be this one. Jnana cannot take place without any आलंबन. ये तो प्रसिद्ध है. माने कुछ हो तभी प्रतीति होती है ना? So therefore, किसी ना किसी आलंब चाहिए ही चाहिए. ज्ञान, for example, knowledge of the object I am taking place. So घट है तो pot is there, pot knowledge is taking place. Knowledge of the pot is taking place. Cloth is there, cloth knowledge is taking place. That means what? If the jnaya is not there, then jnana also cannot take place. That is general feeling. Jnaya is not there, vastu is not there, then the related jnanam also should not take place. Now, if for तत्वज्ञानी, for तत्वज्ञानी के लिए द ज्ञेय इज असत्य है, ज्ञेय वस्तु ही नहीं है तत्वज्ञानी के लिए. तो इफ ज्ञेय इज असत्य, देन व्हेन ज्ञेय इज असत्य, एक्सटर्नल नॉलेज इज मिथ्या, देन ज्ञानी को भी ज्ञान नहीं होना चाहिए. इफ द बिल्कुल, इफ इट इज नॉट देयर, वस्तु इज नॉट देयर, knowledge should not have taken place for tatvajnani, because for jnaya is asatyam. Jnaya is asatya means jnana bhi asatya ho gaya. Now jnana bhed hai. What is it now? Jnana bhed, jnana mein bhed hai, therefore jnaya bhed hai. राइट, इसका खंडित करते जा रहे, खंडन करेंगे अभी. तो ज्ञान भेद है, हमारा अनुभव में क्या है? ज्ञान भेद है. दैट मीन्स सिंस द एक्सपीरियंस इज द वेराइटी ऑफ नॉलेज, वेराइटी इन द केस ऑफ नॉलेज, सो देयर मस्ट बी द वेराइटी इन द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स. इफ देर इज नो ज्ञेय वस्तु, देन ज्ञान बिल्कुल नहीं होना चाहिए. किसी बाहर का वस्तु का ज्ञान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हो तो रह रहा है. सो देयरफॉर ज्ञान भेद है तो ज्ञेय भेद होना ही होना चाहिए. इट मीन्स व्हाट? नॉलेज इज डिफरेंट नॉलेज आई एम गेनिंग, देयरफॉर देयर मस्ट बी ए डिफरेंस इन ज्ञेय वस्तु. ज्ञेय वस्तु शुड बी देयर,
Otherwise, if it is totally mithya, why knowledge is taking place? So, abhi, how the jnanam is taking place? What is the mechanism of knowledge? That all we have to see to understand this shloka. Chittam na sprushati bol diya hai. Consciousness is not coming in contact with external objects. But that's it. वो समझ में नहीं आया हमको. Therefore, this is the doubt normally rises. Suppose the Purvapakshi, that's the Vadi says, Bahyardvadi says, देखिए, if there is no cloth, if there is no pot, then घटक ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, पटक ज्ञान भी नहीं होना चाहिए. Therefore, विषयों का स्फुरण ये कैसे हो रहा है? Spurana is taking place, no? So how Spurana is taking place? Chittam. Now therefore, for which the answer is that, देखिए, जवाब दे रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? अज्ञानी you take for example, ignorant person. Ajnani also, the Bhāṣya, this Śloka says, even the case of Ajnani also, even if he gains the knowledge of an vastu, actually chitta is not actually coming in contact with the external object. Ajnani के लिए भी, ज्ञानी के बात छोड़ दो, ज्ञानी के लिए ज्ञेय वस्तु नहीं है, अज्ञानी के लिए है. Suppose Ajnani is there, he is seeing the objects. But even in the case of Ajnani also, Chittam, the consciousness, cannot come in contact with external objects. What will be proved later on is different. Different is already said that external objects are not there. Now therefore, Chittam na sprushati artham. Artham means objects. Na sprushati. There is no question of चित्तम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अर्थ ऑब्जेक्ट्स. अब देखिए, ये तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ. एक्चुअली सांख्यवाद के अनुसार दे से हाउ इज नॉलेज टेकिंग प्लेस? स्फुरण मीन्स स्फुरण. तो हाउ इज दैट कॉन्टैक्ट इज टेकिंग प्लेस? हाउ नॉलेज इज टेक्स प्लेस? सांख्यवादी सेज इट वाज दैट टाइम व्हेन वी आर लर्निंग, इट वाज करेक्ट. सांख्यवादी के अनुसार how does a knowledge take place? Vastu is bahar hai, there is one object outside. They say that mind goes out, knowledge goes out, takes the shape of the object, then comes into the mind and drops it. This is called vritti vyapti. So that means what? Mind goes out through indriyas, then it sees the pot or cloth, etc., etc. There it goes where pot is, where cloth is, then it takes sadakara vritti, it takes the form of the shape or part of the cloth or anything, pot or cloth, then it comes back and then you will get the knowledge of the particular object. That is how the knowledge takes place. But actually, तत्व के अनुसार ये सब गप्पे है, ये सब झूठ है, झूठ. क्यों? तत्व ही नहीं है. तत्व माने एक्सटर्नल एलिमेंट्स. Tattvas, principles, tattvas. 25 tattvas they say, Sankhya-vadi, Saishwaravadi, Nirishwaravadi. All these things are principles, are 24 tattvas. Tattva se hi bane sare vastu. Actually, this entire process of explanation is gappe, waste. अब देखिए, ये सब हो सकता है. Number one. What is number one? Number one. So now is number one. How many things are there now? Thoughts. What you have proved, objects are real, therefore ज्ञान में वैचित्र्य है, भेद है, संक्लेश है, इसलिए वस्तु का मानना चाहिए. दैट मिटा दिया आर्गुमेंट को कल. नाउ दे से दैट, बट देन इफ ज्ञेय में वस्तु में भेद ही नहीं है, ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो अज्ञानी को भी ज्ञान होता है, ज्ञान को भी ज्ञान होता है, ज्ञान को भी ज्ञान हो रहा है. ये बिल्कुल वस्तु नहीं है तो उसका ज्ञान कैसा होगा? Now उसका जवाब देते हैं. For example, that this one chittam, the consciousness, can never come in contact with the external objects. The statement made. Upaniṣad. Chittam na sprushati. Number one.
But then what is our understanding of sprushana, this spruha, meaning the coming in contact? Because the Sankhyavadi says that knowledge takes place only when the mind, that is knowledge, that is the consciousness goes out through the indriyas, takes the shape of the object, brings back, then the knowledge takes place. ये सब गप्पे है, ये सत्व नहीं है, because external objects itself is not there, they are not there. बाह्य पदार्थ नहीं है अभावत्वात्. देखिए, आचार्य says this spruha is not possible because बाह्य आलंबन विषयत्वम नपि अर्थाभासम चित्तत्वात् स्वप्न चित्रवत्. That we will see later on. Now therefore, ये सब गप्पे है. If that siddhanta is accepted, old siddhanta, if that is the case, बड़ी दूर वस्तु है नक्षत्र. It is millions and millions and millions of light years away. And if you want to know, that means the object has to go, mind has to go, then there and come back. But what is now modern Siddhanta? They say that the object, because of light reflection, already reflecting on retina, you see it, then you will get the knowledge of it. You notice it, you become aware of it, you get the knowledge of it. Wherever you turn your head, opening your eyes, whatever is reflected in retina, that is object, and that is understood by knowledge is gained. So therefore, now in this way, spurana, one more thing. Why spurana? That is, why chitta doesn't come in contact with the objects? This is the question now. One is no objects. No, other explanation also is an important thing is that, see, first of all, spurana is not any karma. Chitta bahar jnana, spurana, contact. This is not any karma. Because jnana is not karma. Why? For example, what is karma? Karma operates in apyam, utpadyam, samskaryam and vikaryam. 4 operations. If anything is to be produced, karma is required, utpadyam. Then apyam, anything to be attained, then karma is required. Anything to be modified, vikarya, karma is required. Anything samskarya, purified, to be purified, then karma is necessary. Now, in which sense in these 4 categories is called karma, kriya? ये ज्ञान एक क्रिया नहीं है. Why it is not kriya? Because when you see pot, pot is not created. Jnana is not, knowledge of pot is not creating the pot. Knowledge of the pot is not attaining the pot. Knowledge of the pot is not bringing any modification in the pot. Knowledge of the pot is not also purifying samskara, also nothing is being done to the pot. Meaning what? I have known it, the pot. But even though I got the knowledge of pot, actually there is no operation of karma. By procuring it or anything there is no change. Karma abhav वहाँ पे. घट के ऊपर there is no action involved on ghata in the process of knowledge. That is why it is only in imagination that the knowledge also is a sort of action. Knowledge also is a karma. कर्म युक्त ज्ञान भी एक कर्म है. जानना ये बड़ा कर्म है, ये भी गलत है, कर्म नहीं हो सकता. बिकॉज नॉलेज इज नॉट अगेन एक्शन. देयरफॉर ज्ञान के साथ क्रिया के फल, ज्ञान के साथ क्रिया का फल हम कल्पना मात्र है. बस जान लिया इसलिए इसका फल निकला. ज्ञान फलम से वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति बोलते हैं ना. वृत्ति व्याप्ति हुआ फिर उसका फल निकला. तो ज्ञान के साथ एक फल जोड़ना एक कल्पना मात्र है. बिकॉज देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी कर्म ऑफ संस्कार्य, आत्म्य, उत्पाद्य, विकार्य एटसेट्रा. So therefore,
ज्ञान से कुछ भास हो रहा है, ज्ञान कर्म भी नहीं है, वस्तु अभाव है बाहर, तो देयरफॉर एक्चुअली स्फुरण, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अकर्मता. इट इज प्रूविंग अकर्मता. स्फुरण, नॉलेज इज ओनली अकर्मता. नंबर वन, वहां पे कोई एक्शन नहीं है. देन द क्वेश्चन इज, दैट मीन्स व्हाट? जानना भी, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जानना ऑल्सो कर्म, अकर्मक है, इज नॉट अ क्रिया. देयरफॉर वहां पे इट इज नॉट सकर्म. एंड हेंस व्हाट चित्त? चित्त मीन्स ज्ञानम. सो व्हाट इज ज्ञानम? अकर्म युक्त. कर्म कैनॉट बी देयर. एंड देयर इज देयरफॉर नॉलेज इज समथिंग गेन्ड एज कर्म, प्रोसेस ऑफ कर्म. एंड इसका एक विकार है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द वस्तु विच इज एक्चुअली नॉट देयर, आउटसाइड वस्तु. ऑल दिस इज थिंग्स आर गलत है. बिकॉज वाई? बिकॉज चित्त डजंट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी वस्तु. फुल स्टॉप. चित्त के साथ कोई किसी वस्तु का संबंध नहीं है. फुल स्टॉप. आप इसको भी 2-3 श्लोक ध्यान से सुनना है. ये बाह्यार्थवादी कहते हैं, इज आर्ग्यूमेंट. सो सॉरी, ये विज्ञानवादी से. सो ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय बाह्यार्थवादी. बस आपने जो बता दिया कि चित्त ज्ञानम इज न स्पृशति, इट डजंट कम इन कॉन्टैक्ट विथ वस्तु. आप हमारा सिद्धांत को गलत पकड़ा है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि चित्त विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट. चित्त विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. बाह्य अर्थ के साथ चित्त का संबंध होना हम ये नहीं कह रहे हैं. मगर बिकॉज ये थोड़ी कहते हैं हम, ये नहीं होगा. मगर विदाउट एनी संबंध नॉलेज ऑल्सो कैनॉट टेक प्लेस. इसीलिए हम कहते हैं आभास, वस्तु आभास के साथ ज्ञान का संपर्क होता है, चित्त का संपर्क होता है. ये ऑब्जेक्शन है. आप ये सिद्धांत के रूप में मत लिखना नोट्स में. वो आएगा, बाद में आएगा, बाद में आएगा सब. आप यू हैव टू स्लोली बिल्ड द थॉट. So therefore, now the Bhāṣyāvadi says, we are talking about reflection of the vastu in the chitta. अदरवाइज ज्ञान कैसा हो सकता है? ज्ञान तो हो रहा है. So when वस्तु युसा, वस्तु का ज्ञान होता है चित्त में. हो रहा है कि नहीं आपको? वही मैं कह रहा हूं. वस्तु तो दिखाई पड़ रहा है, वस्तु का ज्ञान हो रहा है. वस्तु है ही नहीं वास्तव में, वो अलग बात है, वो बाद में प्रूव करना पड़ेगा. तत्व की दृष्टि से वस्तु नहीं है. बट ये कह रहे कि ठीक है भैया, आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को मानते नहीं, आप संपर्क. मैं क्या, कैसे ज्ञान कैसे हो रहा है बताओ? ज्ञान, घट ज्ञान हुआ, कैसे हुआ? घट ज्ञान हुआ माने ज्ञान कुछ है, चित्त के साथ घट का संबंध हुआ. ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई संबंध के बिना ज्ञान कैसे हो सकता है? तो बाह्यार्थवादी सेज दैट, देखिए हम ये कह रहे हैं कि चित्त का कोई वस्तु के साथ संबंध नहीं होता. ठीक है, मान लिया. हम ये नहीं कह रहे, हमारा सिद्धांत है कि आभास के साथ. देखिए नेक्स्ट वन, न अर्थ आभासम तथैव च, श्लोक में है. आभास के साथ भी संपर्क नहीं होगा. वो बाह्यार्थवादी पूछते हैं कि देखिए हम ये नहीं कह रहे, बट जार द घट में नॉट बी देयर, बट घट आभास है ना, घट आभास के साथ संपर्क हो सकता है. विपर्यास ननु विपर्यासः तर्हि असति घटादौ घटादि आभासता चित्तस्य तथा न सत्य विपर्यासः क्वचित वक्तव्य इति. नाउ द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड. ये बताते हैं कि देखिए, हाँ, ऑब्जेक्शन इज रेज्ड. प्रभु, इन द केस ऑफ अपीयरेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हेन देयर इज नो jar, it's okay, must be a false perception. But
दिस इज द कंक्लूजन. अब देखिए इसमें क्या है कि नाउ दी 1 सेकेंड. यस, स्फुरण व्हाट भाष्य सेज दैट अभूतो ही जागृतेपि स्वप्नार्थवदेव बाह्य शब्दार्जो उक्त हेतुत्वाच. नाउ देयरफॉर सो स्फुरण is not there, and then objection raised by Bhāṣyaर्थवादी is that Prabhu nanu viparyasaha. विपर्यास माने स्वप्न में भी आप स्वप्न लिखो, आप स्वप्न में देखो, आप स्वप्न में भी वहाँ पे आभास के साथ संपर्क नहीं है. भाष्यार्थवादी बोलते हैं कि देखिए वस्तु के साथ संपर्क नहीं हो सकता, बट विपर्यासः उसका आभास जो है उसके साथ संपर्क है. हम उसके साथ संपर्क के बिना ज्ञान कैसे होगा, ये बता रहे हैं कि प्रभु इफ दिस इज अ कंक्लूजन, क्वेश्चन मार्क इज आस्किंग. अरे भैया आप हमारा सिद्धांत को समझते नहीं, हम मानते हैं बट आभास के साथ हमका संबंध होता है. अर्थ आभास के साथ स्पर्श होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा. हमारा सिद्धांत यहाँ पे विज्ञानवादी कहते हैं कि बाबा अर्थ आभास also is not touched by the chitta. Consciousness is not coming in contact with the false appearance of the object or the reflection of the object also. बट ज्ञान कैसे हो वो बाद में देखेंगे, बट संपर्क नहीं हो सकता. एग्जाम्पल इज गिवन, एक ऐसे कर दिया आपने जागृत काल में. सो जागृत काल इन द वेकिंग स्टेट I see the snake on the rope. अच्छा, स्वप्न काल में also I see various objects. But now in स्वप्न काल में everything is चित्त only. स्वप्न वस्तु में where is वस्तु आभासा? वहां पे न वस्तु है न वस्तु का आभास है. Whatever is chitta only. So therefore स्वप्न में न पदार्थ के साथ संबंध है न पदार्थ आभास के साथ चित्त का संबंध है, क्योंकि वहां पे चित्त के अलावा कुछ है ही नहीं. Just as in स्वप्न this is what is happening, similarly external world also. हाँ, रस्सी में सांप का आभास जो बना है वो दिख रहा है, आप उसके साथ संबंध तो नहीं हो रहा है. देयर इज नो कॉन्टैक्ट. दोनों में चित्त क्या है, अर्थ से भिन्न है. इन द बोथ द प्लेसेस माइंड इज द चित्त, कॉन्शियसनेस इज नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स एट ऑल. वन बिकॉज ऑफ इल्यूजन इन द ड्रीम में भी एंड ऑल्सो इन वेकिंग प्लेन. Now the beautiful questions will come. Therefore, neither there is any contact with the objects of the dream, nor the reflection of the dream objects in the dream. So in the dream, there is no reflection of the objects. There is no abhasa, and there are no objects other than the mind in the dream. That is the meaning. Therefore, sampark कैसे हो सकता है? When everything is chittam only. So, objects in the dream are nothing but mind. Similarly, the snake on the rope also is nothing but the mind alone. Okay. So भाष्यकार says that, now भाष्यकार विज्ञानवादी only, विज्ञानवादी के रूप में भाष्यकार says there are actually no objects outside. That is, no objects outside which could become the cause of the knowledge. ज्ञान का कारण बनने वाला कोई भी वस्तु इस रूप में बाहर जगत में कहीं पे भी नहीं है, न जागृतावस्था में न स्वप्नावस्था में. नो वस्तु इज देयर. दैट इज वाई देयर इज नो कॉन्टैक्ट ऑफ द माइंड. द वस्तु इज देयर, कॉन्टैक्ट हो सकता है. कॉन्टैक्ट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स, नंबर वन. सिमिलरली चित्त कैन नेवर कॉन्टैक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. चित्त आभास ऑल्सो नॉट पॉसिबल. Because आभास और रिफ्लेक्शन ऑल्सो इज नथिंग बट चित्त ओनली. स्वप्न में वस्तु चित्त ही है, चित्त का आभास भी चित्त ही है. सो देयरफॉर वी मस्ट एक्सेप्ट देयर आर नो आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स इन द ड्रीम ऑल्सो विथ विच आवर माइंड इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट.
There is nothing external objects. What is then dream? Dream is nothing but the mind. So other than the mind, there is nothing in the dream, and therefore, what is the mind itself is taking these shapes of different objects. So there is no samparka. So just as in the dream this is happening, same thing in waking plane also. That means what? Without actually any presence of the object outside, chitta is possible for chitta to gain the experience of the object without actually being present. Even in the waking plane also. So this conclusion is drawn. How did you conclude this? Anumana praman lagaya. वस्तु के बिना वस्तु का अस्तित्व का अनुभव बाह्य जगत में हो सकता है. कैसे लगाया अनुमान? अनुमान के द्वारा अनुमान लगाया that there are no objects in the world outside. ये तो अनुमान ही है, नहीं है, वस्तु नहीं है. Therefore, they are all unreal, just as a snake on the rope. Our objects can never create the knowledge on its own. देख वस्तु है, वस्तु अपने आप उसका ज्ञान प्रकट करता है क्या? एक वस्तु पड़ा है, विदाउट द वस्तु ऑन इटसेल्फ डजंट नो, डजंट टेल अस दैट आई एम अ पॉट. वस्तु डजंट इंट्रोड्यूस, क्योंकि वस्तु है ही नहीं. एंड इट इज ओनली माई परसेप्शन. द फैक्ट इज दैट देयर इज नथिंग अदर देन चित्त. चित्त के अलावा और कुछ है ही नहीं. Therefore, there are no something called external objects with which mind can come in contact with. So कोई चीज़ है ही नहीं. So everything is only घटादि रूप, all भासता है, but चित्त का खेल ही है. This one is said. Now, therefore, with regard to this, the answer is given. Because you are all questions you asked. चित्त है नहीं, चित्त का है, बट विज्ञान, एक्चुअली विज्ञान the answers also I spilled over. So that fellow says that without objects, without knowledge, without abhasa, without samparka, jnana cannot take place. So for which answer also I saw, with little bit we saw. But Vijnanavadi says now, that is to answering the Bhahyartavadi, subjectivist, Vijnanavadi. He says, Nimittam nasada chittam samsprushyatyadvasutrishu animitto viparyasaha katham tasya bhavishyati. Nimittam nasada chittam samsprushyatyadvasutrishu animitto viparyasaha katham tasya bhavishyati. Meaning, nimittam na sada chittam samsprushati advasu trishu. So, consciousness does not come in contact. Trishu means all three states. तीनों अवस्था काल में, neither in present, nor in the past, nor in future. Consciousness will never come in contact with the objects. Why? Objects are not there at all. There being no external. Animitto viparyasaha katham tasya. Therefore, how can there be any baseless false apprehension of it? Now the question is asked. अब देखिए. Now one thing. You see, I'll ask the only question I'll conclude today, because tomorrow we'll start this. You saw a snake on the rope. Acha. How did you see snake on the rope? You must have seen a real snake somewhere. वो ये बता रहे हैं अभी. माने कहीं ना कहीं सच्चाई होना चाहिए. आप कहीं ना कहीं असली सांप को देखा, तभी आप इसको भ्रम हो रहा है. No, when you say everything is perception, there must be real knowledge somewhere. And we must have seen that Purva Smriti. And suppose somebody had never seen a snake, will he superimpose snake on the rope? Therefore, when you are declaring that it is all mithya,
देयर मस्ट बी समवेयर सच्चा ज्ञान, इसका असली स्वरूप. If you say that this is snake is mithya, you must have seen earlier snake. Keeping that in view alone, this snake is superimposed on the rope. So prior to this erroneous perception, there must have been correct perception, real perception somewhere. तो निमित्त होना चाहिए. पूर्व ज्ञान ही निमित्त इधर यहां पे. ये कैसे ब्रह्म बताते हैं? फॉर दैट आंसर इज गिवन, बट इट विल टेक टुमारो विल सी. मैं आपको जल्दी जोड़ रहा हूं आज. सो टुमारो विल सी. सो देयरफॉर दैट आल्सो इज ब्रह्म. सो देयर मस्ट बी समथिंग पॉसिबिलिटी हैज टू बी शोन. अब इफ आई नॉट सीन स्नेक आई विल नॉट. सो वासना नहीं है, स्नेक की पूर्व स्मृति नहीं है, तो आई कैन नेवर सी स्नेक. ये कैसे होगा? सो दैट विल टेक ऑन टू अल्टीमेटली चित्त करके कोई चीज ही नहीं है, वस्तु करके कोई चीज ही नहीं है, वहां तक पहुंच जाएंगे. आप जिसको चित्त कहते हैं वो एक्चुअल शुद्ध चैतन्य है. अल्टीमेटली वहां तक जाएंगे. चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. सद्गुरुनाथ महाराज की जय.